Hello, beta. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, so I hope everybody has done the assignment on fish triangle. So that was the last topic which we did. So today our plan is to move on to the next topic. But before we go on to the next topic, there is one special case in fish triangle which I want to discuss with you. There is one possibility where the question can be made slightly more complicated. So first we will see what is that special case. How can the question be a bouncer kind of question or a complicated question, and how to solve it in that case. Once that is done, then we will proceed to our next topic planned, and that is meeting up with a target ship with another ship. There is another ship in the area. It is steering a particular course with a particular speed. You want to meet up with that other ship either at a particular time or at a particular position. So how to set our course so that we meet up with that target ship. So that is the second topic planned for today. So let's see how much we can cover. So first I'll move to the special case of fish triangle. Before I proceed, any doubts or queries in your mind? All clear? Okay, good. So let's then proceed. Let's first see what is the bouncer which can be given and how do we solve it. So I'll set up the presentation. Now, beta, there is a special case in this fish triangle question, which makes the solution a little bit tricky and complicated. Let's see what that special case can be. Now, let's see that you are given a question in which the direction of the current is such that it is against your course steered and not favorable or not in the same direction. Okay, beta, if you see here, right hand side में जो plot आप देख रहे हो, this is exactly the same question which we did yesterday. So मैंने ये question भी ऊपर यहाँ पे show किया है. On the top left of the screen you can see the question. There is only one change which is there in the question. I have highlighted that change in yellow color. So what is the change? The current in the area which yesterday we did. This is the same question which we did yesterday, and the current in the area direction has been changed. Last time when we did the question yesterday, the set of the current, the direction of the current was 130. You can see this red color arrow here, which shows the 130 direction of the current. Now the direction of the current has been kept to 230.
So this is the only change now. The direction of the current in this case is 230. So with this, let us see what is the problem which we are going to face and how do we take care of that. Like you can see in this particular question, our course steered is in the easterly direction. The current also has a easterly component. So basically the current is favoring the ship. But let's assume that in a particular question, the set of the current which is given is against the course steered. Something like this. You see this vector here? Let's say the current is given to you like this. Now if this is the case, when you draw this current vector from point C, it is never going to meet the TPL3. So this is where the problem arises and you may get confused. How to go about solving this particular question. So beta, did you understand the problem here? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So initially the current was 130. So when we started off from point C with the 130 direction, we could go or reach up to TPL3 line and we could find our point F. But if in this question the set of the current is 230 represented by the maroon color arrow now, so no matter how much long you make this arrow is never going to touch TPL3. So अगर ये TPL3 को टच नहीं करेगा तो हमारा आगे का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट ही नहीं होगा. We will never be able to complete the plot. So that is the problem here. Just have a good look at the plot and let me know if any solution comes to your mind. सर TPL3 से D पॉइंट पे से खींच देंगे करंट को और सेम प्रोसीजर. नहीं बेटा. सर इसमें जो वो सर तो ये गलत हो TPL जाएगा. 3 है सर, इसमें जो ये TPL 3 है सर, ये इसकी शिफ्टिंग पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी तरीके से सर TPL 3 को चेंज करना पड़ेगा पूरा का पूरा. कटना तो पर इसी वो पे ही तो है कर सर. ही नहीं सकते बेटा. कोर्स और स्पीड दे रखी है हमें. कोर्स ठीक है सर, थोड़ा सोचते हैं सर. अगर इनिशियल पोजीशन जो ए है उसको सब होना ऐसे ही है सर, ये फिश ट्रायंगल से ही है, इस पे शुरू में थोड़ा स्टेप चेंज किए जा सकते हैं, लाइक ए नहीं कंडीशन बेटा, पे बिल्कुल ऐसे ही होगा, इसी से होगा. इसी तरह से होगा फिश ट्रायंगल से. राइट. अच्छा सर, एक मिनट. सर अब आप बोलोगे रिवर्स मार दो करंट. नहीं बेटा. रिवर्स रिवर्स तो वैसे मारते नहीं ना सर, रिवर्स तो मारते नहीं है. रिवर्स नहीं मार सकते हैं. रिवर्स तो मार नहीं सकते. सर करंट लगाना भी सी पे ही है ना? वो तो सी पे ही लगेगा बेटा. वो भी सी पे ही लगेगा सर. ठीक है सर. perpendicular to current. Say again बेटा. सर ये perpendicular to current सेम सिचुएशन आ जाएगी. Perpendicular to current. सर अगर करंट सी की जगह डी पे लगा दे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा. वो तो नहीं लगना प्रोसीजर ना. गलत हो गया ना प्रोसीजर, बिकॉज करंट तो सी पे ही लगता है. TPL1 पे ही लगता है, TPL1 वाले पॉइंट पे. सर
सर ऐसा हो सकता है क्या ये टीपीएल को फर्दर शिफ्ट किया जा सकता है सर? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ जैसे, बट रेट तो है नहीं, कर शिफ्ट कहाँ पे करेंगे? ठीक है सर। टीपीएल की शिफ्टिंग भी बेटा फिक्स्ड है, बिकॉज इंटरवल जो है वो हमें पता है। इंटरवल टीपीएल है। 1 को 24 मिनट्स के लिए करना है फॉरवर्ड शिफ्ट, और टीपीएल 3 को 36 मिनट्स के लिए बैक शिफ्ट करना है। सो इंटरवल इज फिक्स्ड, तो स्पीड फिर इज कुछ फिक्स्ड। अजम्पशन करना पड़ेगा सर इसमें, तो फिर कुछ ठीक है सर, आप भी बता दीजिए सर। ओके, अब ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो ये इमिजिएटली समझ में आ जाएगा। ध्यान से ध्यान रखना, 2 मिनट के अंदर अंदर सोल्यूशन आपके पास होगा। बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो ए पॉइंट हमने लिया था, ये कैसे लिया था? सर आर्बिट्रेरी था, कहीं से भी कुछ भी, बस पोजीशन लाइन पे लिया सर। वेरी गुड, दिस इज ए आर्बिट्ररी पॉइंट एंड कैन बी टेकन एनीवेयर, हाँ राइट? सर, इस पोजीशन लाइन पे कहीं पे भी सर। राइट, सो पहली पीएल पे दैट इज ओ एक्स, इस पे मैं ए पॉइंट को कहीं भी ले सकता हूँ। जरा दिमाग लगा के सोचो कि सर नीचे अगर इस लूंगा तो ए, डी पॉइंट आगे आ जाएगा सर। सर नीचे लूंगा तो डी पॉइंट आगे आ जाएगा इसको उसमें। अगर आप इसे टीपीएल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इको, उसके साउथ में ले लो ए पॉइंट को, तो बात बनेगी। हाँ जी सर। सर ये जो आपने असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन भेजा था ना सर, उसमें भी सर ऐसा ही एक प्लॉट बनता था। अगर उसका ए पॉइंट को बिल्कुल लोअर पे ले रहे थे तो उसका जो डी है सर वो सी से आगे आ जा रहा था। राइट बिकॉज ऑफ राइट 12 नॉट के कारण ना सर, वो डी का वाला सी से आगे आ जाता था, और एफ पे जो करंट लगना था वो टीपीएल आगे निकल जाती थी, एफ पीछे रह जाता था मतलब। तो हाँ, ऐसा राइट उसमें भी हो रहा था सर। मतलब अगर नीचे लिया था ना पहले जैसे मैंने, तो उसके राइट, थोड़ा बड़ा बन जाएगा, बट वो ऐसे ही हो रहा था, तो फिर मैंने कहा शायद गलत ना हो जाए तो ऊपर ले लिया। अच्छा ओके। एग्जैक्टली बेटा, राइट, यू आर राइट, यू मेड द राइट ऑब्जर्वेशन. So did you get the clue now? We have to take point A on other side of E. Let me explain it. Now, in these type of questions, what you have to do is, when you select your point A, you have to be careful. If you select your point A and this kind of thing happens, what you have to do is, this point A has to be selected on the other side of the transferred PL intersection point, eco point. You see this TPL1, transferred PL1, you see this TPL3, transferred PL3, they are both intersecting at point E. Now initially we had taken this point A northwards of E and drawn our plot, but if the direction of the current is against the course steered, you pick up this point A southwards of E. So when you pick up A somewhere here, draw the course steered vector up to TPL1. You will see once you draw the current vector, it will meet the TPL3 and you will be able to solve your question. So that is the thing to keep in mind. In case the current is against the course steered, you go on the other side of the transferred PL intersection point. So is it getting clear in the mind beta now? Yes, sir. सर एक Just बात have, बताएंगे सर? सर ऐसे बोलो जैसे बेटा, ये क्वेश्चन है बोलो सर, बेटा. सर एकदम से जैसे देख के हमें कुछ आइडिया हो सकता है कि लाइक कैसे हम चूज करें कि ये जो टीपीएल है ये आगे या पीछे हो जाएगा? मतलब एकदम से लाइक, वैसे तो शायद एग्जांपल्स करने से थोड़ा टाइम के बाद पता लग जाएगा, बट एज सच कुछ है सर कि लाइक देख के सीधा पता लग जाए कि इसका पॉइंट ऊपर या नीचे लेना पड़ेगा ई से? नहीं बेटा, आपको इनिशियली क्वेश्चन मतलब देख एक के बार बना के, ये हाँ एक चीज़ बार पता बना नहीं के, चलेगी. आपको हाँ। कम से कम जो पहले स्टेप्स है ना, जिसमें हमने हम्म, पीएल ड्रॉ की थी, पहले तो हाँ आपको पीएल्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी हाँ तीनों. हाँ हाँ जी हाँ जी। उसके बाद आपको ये दोनों टीपीएल भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, TPL1 एंड TPL3. हाँ फिर सी जैसे और ही डी से आप, स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ जैसे ही आप ये TPL1 और 3 ड्रॉ कर लोगे, हाँ तब जी। आपको पता चल जाएगा
looking at the direction of the current कि आपने A point इको से क्रॉसिंग पॉइंट से नॉर्थ में लेना है या साउथ में लेना है. ठीक है सर, ठीक है. ओके, सो TPL1 और TPL3 को तो पहले प्लॉट करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इको पॉइंट को. जब ये हो जाएगा आइडेंटिफाई, फिर आप इजीली पता लगा सकते हो लुकिंग एट द डायरेक्शन और सेट ऑफ द करंट कि आपका ए पॉइंट इंटरसेक्शन के किस तरफ आएगा, वेदर नॉर्थ ऑफ ई और साउथ ऑफ ई. ठीक है सर. So beta, just have a good look at the plot. Let me know if there is any doubt. Okay, so looks like this is also clear, beta. Yes, sir. Very good. So shall we proceed ahead to the next topic? Yes, sir. Okay. सर एक बार स्लाइड ओपन करना पुरानी है. Okay, beta. Just a minute. Here it is, beta. तो ये तो असाइनमेंट खोल दी. Can you see the slide now? No sir, only assignment number 5 track. Okay, just a minute. Let me know once you are done, beta. हाँ सर, मैंने सर जैसे TPL3 अगर नीचे ई से नीचे क्रॉस करेगी और TPL1 नीचे क्रॉस करेगी, तो जैसे इस वाले पॉइंट में हम TPL1 पे करंट ड्रॉ कर देते हैं, तो उसमें Okay. TPL1 पे करेंगे तो भी करंट तो ओके अपोजिट में चला जाएगा, तो फिर सेम प्रोसीजर रहेगा, बस डायरेक्शन ऊपर नीचे हो जाएंगी. बेटा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, सिर्फ आपका पॉइंट ए ई के इंटरसेक्शन पॉइंट के साउथ में चला जाएगा, दैट्स ऑल. बाकी सारा प्रोसीजर सेम. मतलब ये सेम जैसे फिश ट्रायंगल, जैसे अभी ACH ऊपर बन रहा है तो ACH नीचे हो जाएगा और HFG ऊपर हो जाएगा, दैट्स ओनली ना. बेटा और कुछ डिफरेंट नहीं होगा, बस आपने जो ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है ना, इसे हाँ. नीचे ले लेना है. लेट्स से समवेयर वेयर एक्स इज राइट नाउ, यू ओके टेक इट हियर एंड यू फॉलो द एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर. ओके ओके ठीक है. बेटा पहले हमें बनाना पड़ेगा ना, पता करने के लिए कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पहला ये भी बनाया. से अगेन बेटा, यू आर नॉट क्लियर. हिमांशु, बेटा कैन यू हिमांशु आस्क पानी ला दे. what was your doubt beta, can you repeat please? Doubt is gone or the person is gone? Both sir. The person sir. Okay, all right. Okay, ठीक है बेटा. So that was fish triangle special case, and now we move on to the next topic, which is rendezvous. Before I go into it, let me give you a brief introduction about what it is.
let us say you are given a target ship. There is a target ship which is somewhere close to you, 50, 60, 100 miles. That particular ship is steering a certain course with a certain speed. So it's a moving target. Now what you have to do is you have go ahead Chetan. सर आप रिपीट करेंगे सर, नेटवर्क थोड़ा चला गया. No problem beta, here it is. Next topic, rendezvous. What is the meaning of rendezvous? Let us say there is a target ship close to you. Let's say 100 miles away from you, there is a ship. That ship is moving on a certain course with a certain speed. Now you are directed to meet with that other ship. The other ship is not going to alter its course. It will continue moving on that particular course with that particular speed. You have to set a certain course and maintain a certain speed so that you go and meet up with that other ship. This could be a scenario, let us say, when you are doing search and rescue, or you are yourself in requirement of assistance and there is another vessel which is coming for your help. So just to ensure that you meet up at a particular place, you have to set your course and speed in that particular way. So how do we find out what course and speed should we set so that we meet up with the other ship either at a particular position or at a particular time? So this is what is we call a rendezvous, meeting up with another ship. So this topic is not very adequately covered up in any of the textbooks. So I have covered up in detail, and once we cover up this topic, I'll give you an assignment on this particular rendezvous topic. So what I have done is I have divided this question into 3 different parts. So there are 3 scenarios in which this question can be given to you. So we will discuss those scenarios one by one. So let us go into the topic in detail now and let us see the 3 different parts. सर ये सिर्फ रेस्पेक्ट ऑफ अनदर शिप होता है या किसी भी बॉडी के रेस्पेक्ट में हो सकता है? लाइक यू सेड ना मीटिंग अप विद द अनदर शिप, तो मतलब सिर्फ दूसरे शिप के रेस्पेक्ट में ही है, जिस मतलब या किसी के भी रेस्पेक्ट में हो सकता है, जैसे लाइट हाउस, बीकॉन, रेकॉन, किसी के भी? बेटा लाइट हाउस, बीकन और रेकन तो स्टेशनरी हैं बेचारे, वो तो चल ही नहीं सकते, तो उनसे मीटअप करना तो बहुत आसान है. You have to just draw a line joining them and that becomes your CMG. ओके, तो मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट बेसिकली कोई सा भी. एग्जैक्टली बेटा. शूटिंग देखिए बेटा, शूटिंग में जो नॉर्मल राउंड्स होते हैं उनमें तो आपको टारगेट देते हैं हिट करने के लिए. और फिर जब उसके बाद थोड़ा आप एडवांस्ड लेवल पे चले जाते हो, देन दे थ्रो द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. ओके, समटाइम फ्लाइंग चिकन है ना, sometime plates, sometime objects, they throw it in the sky. You have to aim and shoot them in the sky. Okay sir, मतलब basically moving. Exactly. क्योंकि जो फिक्स दोनों जगह पे करंट लगना है, दोनों जगहों पे करंट लगाना पड़ेगा, अपने पे भी और उस पे भी, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम कितना मूव होंगे, वो कितना मूव होगा, सब देखना है, दोनों पे रनिंग. राइट बेटा, राइट. सो अगर तो दूसरा टारगेट रुका हुआ है या स्टेशनरी है, फिर तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता, फिर तो बड़ा आसान काम है. जो भी टारगेट की पोजीशन है उसे अपनी पोजीशन से ज्वाइन कर दो, आपको मिल गया अपना CMG. अब तो करंट, अगर करंट है उस एरिया में तो उसे काउंटर एक्ट करना है एंड द क्वेश्चन इज ओवर. बट द क्वेश्चन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन द टारगेट इज मूविंग. सो इसमें एक चीज और पूछनी थी, इफ द टारगेट इज मूविंग बट डज नॉट हैव द इंजन स्पीड, लाइक सम ऑफ द वेसल इज फेलियर हो गया, इंजन फेलियर हो गया, पर वो मूव कर रहा है ड्यू टू द वेव्स एंड करंट, इसकी वजह से, तो इसमें रेंडezvous लगाएंगे या सिर्फ एक्सपोजिशन मानेंगे? इसमें रेंडेवू लगा सकते हो बेटा, इफ देयर इज करंट इन द एरिया. ओके, यू कैन कॉल इट ए रेंडेवू क्वेश्चन, दो इट्स वेरी सिंपल.
So if there is no current in the area, then it's a pretty simple and straightforward question. Okay. Basically, ठीक है Okay. सर. Okay. So let's go into the presentation. Let's see the different parts of this particular topic. Okay, let's now go into our next topic. The next topic which we have is this. Now, the first doubt which comes to our mind is, how do we pronounce it? The word is pronounced as rendezvous. So this is how we pronounce the word rendezvous. The second doubt which comes to our mind is, what does it mean? The meaning of this word rendezvous is a meeting at an agreed time and place. Now, in respect of a ship, this basically means that if you want to meet up with another ship at a pre-decided place or a pre-decided time, it is called as rendezvous with the other ship. Now, this could be a scenario, say for example, if you receive a distress message, the ship is in distress and is asking for your assistance. Now, the other ship is steering some particular course with a particular speed, and you want to meet up with that ship. So in these rendezvous calculations, we will be able to find out how to meet up with the other ship. What course do we need to steer? What speed we need to maintain? It can be calculated using the rendezvous method. Now the questions which come in our exams can be divided into three categories. It will make the solution of the question very, very simple. So these three categories are, the first one is when you want to rendezvous with another ship and there is no current in the area. So without any current. Second type is when there is current in the area, which is affecting the target ship and is also affecting your ship. And the third category is when there is different current at own ship location and the target ship location. So you have different currents at both the locations. So we will do these three types one by one. So let's go into our first type of rendezvous problem, that is rendezvous without current. Let's open up the chart where we will be doing these calculations. This is rendezvous without any current. Now, before we go into this topic, one thing which I would like to discuss here is that there are many methods which are available for doing the rendezvous calculations. Some people use radar plotting type of methods. There are other methods also which can be used. What I have tried to do here is I have tried to pick up the most simple, most basic method, which are very easy to understand and which help you to quickly find the solution of this question without any confusion coming to your mind. So these solutions are
written down or done, keeping in mind the simplicity which we require. So let's start off with our first type of rendezvous problem. Now, beta, in these type of questions, the data which is given to us is the question tells us the position of both the ships, that is our ship and the target ship or the other ship. The speed of own ship is given to us. We know what is the speed with which we can maintain. We have the true course and the speed of the other ship or the target ship. It is told to us what course the other ship is steering and what speed the other ship is maintaining. In case wind is also present in the area, then they tell us the direction of the wind, and it is also given what is the leeway angle applicable. What we are required to find out is what course our ship should be steering to rendezvous or meet up with the other ship or the target ship. We are also required to find out what is our rendezvous position, meeting position, and at what time we will be meeting up with the other ship. So this is what we are required to find out. So beta, all clear in the data, beta? Any doubts up to here? Yes, sir. No, sir. No, sir. Okay, very good. Let's proceed ahead. Now, the first thing which we have to do is we have to plot the own ship position on chart. So let's plot our own ship position. Let's assume that our position is given to be here in this part. Let's name it as A. And the position of the target ship or other ship is also given to us. So let's plot the position of other ship also. Let's assume the other ship is at this particular location. Let's name it as B. Now we have to first of all join both these positions by a single line. So let's draw a line joining both the positions. We have this line AB on our chart now. Now we have to plot the course steered by the other ship. So the target ship, Bravo ship, what course the other ship is steering. Let's plot that course on the chart. We have the course of the target ship plotted on the chart now. Now on this course line, we have to mark the distance traveled by the other ship in 1 hour on this particular course. So we will open up our compass equal to the distance covered by the other ship in 1 hour. Center our compass at B and draw an arc. So you can see this arc. The radius of this arc is equal to the distance traveled by the target ship or other ship in 1 hour. Let's mark this point as point D, where the arc is cutting the course line. Now this Bravo delta is the target ship or other ship course and distance vector for 1 hour. Now from point D, we have to draw another arc. The radius of this arc, which we are going to draw now, is equal to the distance
traveled by own ship in the same time interval of 1 hour. We have drawn the vector of other ship for 1 hour duration. So now we will be drawing the vector of our own ship for the same duration. So I open up my compass equal to the distance traveled by own ship in 1 hour. Keep my compass centered at point D and I will draw an arc. Now this arc, you can see here, I've drawn that arc. This arc cuts the line AB joining both the positions at a certain point. Let's name that point as E, eco. So you can see E point here. Now let's join E and D, both these points. So you can see we have joined both these points, eco and delta. Now this vector which you see here, eco delta vector, is own ship course and distance vector for a duration of 1 hour. So you can see it here. We have the own ship course and distance vector for a duration of 1 hour on the plot or on the chart. Now we have to transfer this eco delta to point A. So we will use our parallel ruler, sliding ruler or set square, whatever tool you are using to draw parallel lines. Align it with eco delta and transfer it to pass from point A. So let's draw a line parallel to eco delta passing from point A. So you can see this line now. Parallel to eco delta, that is own ship course, and passing from our position, that is point A. Now this line which we have drawn is our own ship actual track for rendezvous with another ship. Now this line which we have drawn, it will meet up with the track of the target ship at a certain point. Let's call that point as C, Charlie. Now this Charlie is our rendezvous position. Okay, so any doubts, beta, in the plot? Just have a good look at the plot. Let me know if there are any doubts. सर एक बार ये पॉइंट ई फिर से बताइएगा, तो कट किया आपने। Which point, beta? पॉइंट ई सर, पॉइंट ई। Okay. Delta तक clear है बेटा? Up to point D is clear? यस सर। Okay. बेटा जब आपको ये point D मिल जाता है, you have the Bravo delta vector, which is the course and distance vector for the target ship for 1 hour. तो उसके बाद आप अपनी compass open करते हो equal to the distance covered by own ship in 1 hour. So that will be basically our engine speed. You open up your compass equal to own ship engine speed or engine distance for 1 hour. Place that compass at point delta and draw the arc to cut the line AB. This is how we obtain point eco. ओके ओके सर। सर बोलो बेटा। सर इस पॉइंट को निकालने के लिए अगर हमारे पास दोनों शिप्स के कोर्स पड़े और सीएमजी पता है, तो जो जहाँ दोनों सीएमजी मिलेंगे वो रेंजो पोजीशन हो जाएगी ना डायरेक्टली, तो इसमें हमने ऐसे प्लॉट क्यों किया? बेटा अपने शिप का सीएमजी थोड़ी पता है हमें, वो तो निकालना है ना। सर इसमें विदाउट करंट है तो सीएमजी और सीटीएस सेम ही होगा ना। Yeah, that's right. There is no CMG basically. CTS is the CMG. अच्छा, तो अपना सीटीएस भी निकालना है, इसलिए अपने को पोजीशन नहीं पता। Right बेटा, अपना CTS ही तो निकालना है। ठीक है सर। फिर एक बार पीछे वाली स्लाइड ओपन करेंगे प्लीज। ओके बेटा, ओके।
ये लो बेटा। थैंक यू सर। ओके, so is it all clear up to here बेटा? जी सर, हाँ जी सर एक बार 17 नंबर भी ओपन करना प्लीज। Say again. 17 नंबर। Okay, ये लो बेटा। ओके सर, थैंक यू। Okay, so shall we proceed ahead now? हाँ जी। यस सर। 18 नंबर हमने अपना कोर्स टियर भी निकाल लिया है और हमने रेंडेवू पोजीशन भी निकाल ली है। So let's proceed ahead. We have found our rendezvous position. Now, other things which we need to find out is the course to steer and the time to rendezvous. Now, we can read out this course from the chart. This is the course to steer, and if there is any wind given, the leeway angle is given to us, wind is present in that area, then this will be the leeway track. So in case of wind, we will have to counteract the leeway appropriately to calculate or find out what is the true course to steer for own ship to rendezvous with the other ship. सर अब If we are इसमें जो required to स्टार्टिंग find out the compass course to steer, then we have to apply the variation and the deviation. And once we apply the compass error through variation and deviation, it will give us the compass course to steer. बोलो बेटा। सर अब इसमें जैसे आपने बोला लीवे, तो सर जो शुरू में अपना जो हमने अदरशिप कोर्स एंड ओनशिप कोर्स है सर, इसमें भी लीवे ट्रैक ही बजेगा ना? एग्जैक्टली बेटा, चार्ट पे लीवे ट्रैक ही प्लॉट करेंगे। इसमें भी इसमें वही वाला जो लीवे हम नीचे मतलब लगा के हम कह रहे हैं कि ये लीवे ट्रैक आया है, तो वही सेम जो लीवे वाला वो शुरू में भी हमारे में भी लगाना पड़ेगा ना दोनों में? Right beta, for target ship ठीक है also, if it ठीक है says सर। that the wind is same in the target ship location and our location, we will apply that to the target ship vector also. ठीक है सर, ओके, थैंक यू। Okay. Now to find out the time to rendezvous, we have to measure this distance AC, Alpha Charlie. We know what is our engine speed. So this Alpha Charlie is the total distance to be covered by the ship for rendezvous. If we divide this Alpha Charlie distance by our engine speed, it will give us what is the time after which we will be meeting up with other ship. So distance AC divided by the speed of own ship gives us the time to rendezvous. Now you can also find the time to rendezvous using the target ship or other ship vector. For this, what you can do is you have to measure distance BC. This is the distance covered by other ship to the rendezvous position. So this distance BC divided by the speed of other ship will also give you the time to rendezvous. Now, whether you find the time to rendezvous using own ship speed and distance or the target ship speed and distance, in both the cases, the answer would be same. If there is any difference, a minor difference could be there. That could be because of plotting errors. Geometrically, whether you calculate it from your ship course and speed or the target ship course and speed, it will be the same.
सर अगर डिफरेंस आता हो दोनों में तो ज़्यादा टाइम वाला लेना है या कम टाइम वाला लेना है सर? बेटा डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ प्लॉटिंग एरर्स. सो इफ सब्सटेंशियल डिफरेंस इज कमिंग, चेक योर प्लॉट अगेन. नहीं सर, अगर जैसे 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, लेट से AC वाला आ रहा है 16:50 पे और BC वाला आ रहा है 16:40 पे, और पेपर में लिखना है अब एक टाइम, तो 16:50 वाला लिखना है कि 16:40 वाला लिखना है? बेटा जिसकी स्पीड ज़्यादा है ना उसका हाँ डिस्टेंस जी, ले लो, उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी. ठीक है सर, अब क्योंकि बड़ा बने सर, ठीक है सर। करेक्ट, बिकॉज वो उतना ही लंबा ट्रैक होगा और उसकी ठीक है सर। एक्यूरेसी भी प्रेफरेबली उतनी ज़्यादा होगी. ओके, अदरवाइज नॉट टू बॉदर यस सर। अबाउट इट. अगर आपके दोनों टाइम्स दोनों से आपने चेक किया अलग अलग भी आ रहे हैं and you don't have much time to further put in this question, just take a mean of it and write down as the answer. ओके, ठीक है। Okay. There could be a special case in these type of questions, making the question a little complicated. What could be that case? Now, if plotting work on the chart is not possible, what could be the scenario in which it is not possible? Either the positions of both the ships, own ship and the other ship or target ship, or the position of rendezvous, they are very, very far apart, or these positions are not on the chart. Whatever latitude, longitude is given to you, you check it and it is not coming on the chart. Now, in this case, how to solve this rendezvous question? Now, in this case, what we can do is, since we have the position of own ship and the target ship known to us, we have to calculate the range and bearing of the target ship from our ship using plain sailing. So by plain sailing from both these positions, we can find out the range and bearing of the target ship. Now, once the range and bearing of the target ship is known to us, we can make this entire plot or the triangle ABC on our answer sheet using a appropriate scale, exactly similar to how we do plotting questions. We do staggered and simultaneous plotting questions on our answer sheet. Exactly in the same way, we can now plot this triangle, the rendezvous triangle, on our answer sheet by using a appropriate scale. So this is also clear, beta? नहीं सर, नहीं समझ आया मुझे क्या हो रहा Okay. क्वेश्चन समझ में आया बेटा? है कि बी की पोजीशन नहीं दे रखी सेकंड शिफ्ट में। लेट अस से उन्होंने आपको ए और बी जो दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो चार्ट पे ही नहीं है हमारे. ओके, Their latitude longitude is either not given, and even if it is given, it is not on the chart which we are using. So ऐसे केस में फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे? फिर पता नहीं सर। राइट, अब वो कैसे करेंगे सुनो ध्यान से. हाँ सर, बोलिए सर। हाँ बेटा, यू कैन म्यूट योर माइक, देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइस. ओके, अगर ये दोनों पोजीशंस आपके चार्ट पे ना हो और दे आर वेरी फार अपार्ट, लेट अस से 500 माइल्स का डिफरेंस आ गया ए और बी में, so that means they are not on the same chart. You cannot plot this diagram on your chart then. So ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? You can plot this entire thing on your answer sheet by taking a suitable scale. Let us say they tell you कि जो ये टारगेट शिप है ये आपके शिप से 500 miles away है, 500 miles away, and it is on a bearing of 350. So what you can do now is, instead of plotting it on the chart पे तो ये plot होगा नहीं, you plot it on your answer sheet.
अब आंसर शीट में 500 माइल्स को कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम एक सूटेबल स्केल चूज कर लेंगे. We will take a scale of 1 centimeter is equal to 50 miles. So if 1 centimeter is equal to 50 miles, then 500 miles converts to 10 centimeters. So हम लोग पोजीशन A को प्लॉट करेंगे अपनी आंसर शीट में और 350 की डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर्स पे पोजीशन B को प्लॉट कर देंगे. And the entire thing what we have done here can be done on the answer sheet also. इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए चार्ट होना ज़रूरी नहीं है, ये क्वेश्चन हमारी आंसर शीट पे भी हो सकता है. सो इज इट क्लियर नाउ? सर आपने इनिशियल बोला ना दोनों ही पोजीशन नहीं पता, तो ए को प्लॉट ही कैसे करेंगे अगर पोजीशन नहीं पता तो? बेटा अगर आपको कोई भी पोजीशन नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि टारगेट शिप आपसे 350 की बियरिंग पे है और 500 माइल्स दूर है. हाँ ठीक है सर. सो कैन यू प्लॉट दीज टू पोजीशन ऑन योर आंसर शीट? मैं आर्बिट्रेटिव एक पोजीशन ले लूंगा, उससे कर सकता हूँ दूसरी पोजीशन निकाल. एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल वैसे ही करेंगे. ओके ठीक है. ओके इसमें आंसर प्रेजेंट कैसे करेंगे? बेटा, लिटिल लाउडर, लिटिल लाउडर. सर उस केस में आंसर प्रेजेंट कैसे करेंगे? पोजीशन वगैरह क्या लिखेंगे? बेटा उस केस में आपसे ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड नहीं पूछेंगे. इफ दे डोंट गिव यू द पोजीशन, they will not ask you the rendezvous position, they will only ask you course and speed. ओके सर. ओके और बताओ बेटा, और डाउट्स बताओ. सर अगर ये अपना बात पूछ रही थी सर, जैसे फिर अगर आप 1 सेंटीमीटर को 50 माइल्स ले रहे हो तो फिर अगर हम अपना कोर्स वगैरह सब वैसे प्लॉट करेंगे सर? हाँ बेटा, कोर्स में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं. अगर टारगेट काटेंगे वो डिस्टेंस काफी छोटा नहीं हो जाएगा सर एज कंपेयर टू स्केल? राइट बेटा, हो जाएगा. दैट पेपर सेटर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ. वो जो भी क्वेश्चन आपको देगा वो ऐसा देगा कि आप स्केल डाउन करने के बाद भी एक सूटेबल डायमेंशन की ट्रायंगल बना पाओगे बेटा. अच्छा, मतलब वो सर हाइपोथेटिकल फिगर्स देंगे? यस यस यस, दैट्स राइट. अंडरस्टूड सर. फिर वो उस हिसाब, ठीक है सर, क्लियर. हाँ और बताओ बेटा, और क्या डाउट है? सर ये जैसे अगर विंड दिया रहता कुछ लीवे, तो जो हम लोग अपना बीडी ट्रैक स्टार्टिंग में जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें उसको अलाउ करना पड़ता, और फाइनल जब हम अपना एसी निकाले तो वहाँ पे क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता? राइट बेटा, एग्जैक्टली राइट. अगर हमें टारगेट शिप का कोर्स स्टीयर दिया है तो जब हम चार्ट पे इसको प्लॉट करेंगे, चार्ट पे तो लीवर ट्रैक प्लॉट करना है तो हम इसे अलाउ करेंगे. और जब हमारे शिप का कोर्स अल्फा चार्ली AC जो है हम रीड करेंगे तो चार्ट पे तो ये लीवर ट्रैक है. सो ऑन दिस लीवर ट्रैक वी विल काउंटरैक्ट द विंड एंड फाइंड आउट आवर CTS. सर जैसे हम ये पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने आंसर शीट पे करना है सर, इसमें जैसे अगर पोजीशन नहीं गिवन होगी सर, पोजीशन गिवन होगी ना, एक पोजीशन तो गिवन होगी ना? नहीं बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी पोजीशन गिवन ना हो, सिर्फ रेंज एंड बियरिंग. अब जैसे मैंने एक इनिशियल आर्बिट्री पॉइंट लेके मार लिया है ना? राइट राइट. अब सर लेकिन दैट कैन नॉट बी द एक्चुअल रेंडोवर पोजीशन ना, बिकॉज जहाँ से मैं चला हूँ मुझे वही नहीं पता है. राइट बेटा, अभी बताता हूँ मैं, 1 मिनट रुको. हाँ जी. Okay beta, let us say they give us a question that there is a target ship which is at a bearing of 350 and 100 miles off. It is steering a course of 080 with a speed of 12 knots. This is for the other vessel na, 080 12 knots. Yeah, this is target ship beta. Okay sir. Target ship.
let us call it TS, target ship. So target ship 350 bearing 100 miles off, steering a course of 080 at a speed of 12 knots. Our maximum speed is 15 knots. That is our maximum speed. So this is our speed, maximum speed. Find out the course to steer to rendezvous with other ship. ये question है बेटा. ओके सर. ओके अब ये चार्ट पे होगा नहीं क्योंकि ये 100 माइल्स का डिस्टेंस जो है मुश्किल हो जाएगा चार्ट पे लेना. एंड पोजीशन कोई भी नहीं दे रखी है. यू सी देयर इज नो पोजीशन गिवन एट ऑल, राइट? कोई पोजीशन नहीं है सर. राइट. अब इसे कैसे करना है? लेट्स से मैं अपनी एक पोजीशन आर्बिट्रेरी ये पॉइंट लेता हूं. दिस इज माय पोजीशन. ओके, लेट्स कॉल इट ए. And I take a scale of 1:10. So from A, if I draw a line on a bearing of 350 using my protractor or 360-degree round, and I cut off a distance of 10 miles, तो ये क्या आ जाएगी बेटा? टारगेट शिप की वो आ गई. This will be the target ship, right? This is 350 into 100 miles. Now target ship is courses 080. So I draw this 080 track here and target ship speed is 12 knots. So 12 knots as per my scale, if I use a 1 hour triangle, it will be 1.2 centimeters. मैं यहाँ पे 1 घंटे की ट्राइंगल नहीं बनाता, मैं यहाँ पे 5 घंटे की ट्राइंगल बनाता हूँ. सो 5 घंटे की ट्राइंगल में ये जो 12 नॉट्स की स्पीड के साथ डिस्टेंस हो जाएगा 60 माइल्स, which comes to 6 centimeters. So that comes here, right? अब 5 घंटे में मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा? 15 5 is 75. So that is 7.5 centimeter. So I keep my compass here, open it up 7.5 centimeter and cut it. What is this one? On ship's course and speed. That is on ship's course and speed. Right बेटा, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे. Wherever it goes and meets, this is where our ships will be meeting. But ये पोजीशन इसमें पूछी नहीं होगी क्योंकि आपको कोई भी शिप की लेट लॉन्ग नहीं दी हुई है. So they cannot ask you the rendezvous position also. रडार प्लॉटिंग होगी. ठीक है. ओके बेटा, अंडरस्टूड? यस सर. राइट. सो अब यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं बेटा, हमारा सेशन इज ओवर. सो थिंक अबाउट दिस एंड टुमारो आई हैव ए सेशन विद यू. इफ यू हैव एनी डाउट्स वी विल डिस्कस दिस वंस अगेन एंड देन वी विल डू द रिमेनिंग वंस आल्सो. सर एक बात पूछनी थी. बोलो बेटा. विद रिस्पेक्ट टू ये हेलीकॉप्टर वगैरह के साथ भी कर सकते हैं सर सार ऑपरेशन में? बेटा जो मेथड है वो तो किसी भी चीज के साथ किया जा सकता है. मेथड जो है किसी भी चीज के साथ यूज किया जा सकता है, बट प्रैक्टिकली हेलीकॉप्टर को हमारे लिए कैच कर पाना बहुत मुश्किल होगा. इट विल बी बियॉन्ड आवर रेंज. ठीक. ओके, बट द कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड विद एनी ऑब्जेक्ट. थ्योरेटिकली तो जैसे ज्योमेट्री के हिसाब से तो ये सही बैठ जाएगा सर. अगर थ्योरेटिकली करना चाहते हैं, अगर हमें दोनों की फिगर्स दे दें तो पोजीशन तो आ जाएगी. एग्जैक्टली आ जाएगी बेटा. द मेथड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन वेदर बोथ ऑफ दीज आर शिप्स और कार्स और साइकिल्स, हेलीकॉप्टर्स, एनीथिंग. ठीक है सर, क्लियर सर, थैंक यू. ओके. सो सर और कितने टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं सर अभी अपने, और कितने टाइप के और करने हैं? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल रेंडवी एक टाइप हो गया, ऐसे और कितने बचे हुए हैं? बस बेटा एक ही रह गया. एक आपने अभी नंबर 5 असाइनमेंट कर ली है ना? यस सर, कर ली है. अब एक ही असाइनमेंट रह गई है. डोंट वरी, चार्ट वर्क की एक ही रह गई है. देन वी मूव ऑन टू सेल मैप. ओके सर, थैंक यू. सर तो फिर ये आप इसके अलावा भी क्वेश्चंस दोगे क्या चार्ट वर्क के, ये 6 असाइनमेंट के अलावा भी? नहीं बेटा, और चाहिए तो पास्ट पेपर्स उठा लो.
ठीक है सर, मतलब 5 पेपर्स में से। ठीक है सर। Right. Thank you, sir. See you tomorrow. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Bye bye.